I know that was sad, and that's how all the bikers all around the world like me will be feeling right now during this lockdown phase. But anyways, if you're new to the channel, consider subscribing. My name is Sumendra and I keep on uploading a lot of videos every week. So do subscribe and do not forget to hit that bell icon, or else you're not going to get any notifications for my new videos. Alright, let's continue with the video. Hey, morning. So it's just like 4:15 AM right now, and you must be wondering why am I wearing this. I'm just missing my Sunday rides. Man, this virus has fucked up the lifestyle. And I mean, it's Sunday, but अभी कौन सा दिन है? It doesn't even make sense checking कि कौन सा दिन है आज, कौन सा date है, because every day almost feels like a Sunday, even if I'm home and doing all of my stuff like the regular timeline. But you know how our Sunday timeline looks like. Normally Sunday में क्या होता है कि मैं 4-4:30 बजे तक उठ जाता हूँ, ईमेल्स आधा घंटा तक रिप्लाई करके 5 बजे से मेरा सूट वूट पहनने का पूरा स्केड्यूल स्टार्ट होता है. 5:30 बजे तक मेरे को जाके फिर फ्यूल भर के पहुंचना रहता है राइड के लिए. बट आई मीन दिस संडे ऑलमोस्ट सीम्स लॉनली, एंड द म्यूजिक विच इज प्लेइंग राइट नाउ इन द बैकग्राउंड इज लाइक दिस, something like this. Now Sunday is something we all wait for. Some wait for Sundays to sleep, some wait for daru, some wait for khatti, some wait for masti. But हमें Sunday only wait रहता है कि कब Sunday होगा and we will go on a ride. I mean it's been a ritual like us for years now. संडे हुआ मतलब सैटरडे रात से ही गाड़ी रेडी, गियर्स रेडी, सब कुछ रेडी होकर रेडी होना चाहिए कि हाँ सुबह सुबह उठ के राइड पे जाना है एंड हैव टू एंजॉय द राइड, have a cheat meal, come back home, ride back home and have some good time with the family. So that is how our Sunday has been going for last 7 or 8 years now, at least for me. And I mean today आज तो मेरे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं कि गाड़ी कैसे बाहर लेके जाना है. I don't even have a single option. तो आज लास्ट में बेसमेंट में जाके गाड़ी चलाना पड़ेगा. हाँ, बेसमेंट में ही आज गाड़ी चलेगा. देखो कैसे चल रहा है. सो वो सब डिटेल्स का तो हम बाद में बात करेंगे वीडियो में. पहले मैं आपको स्टार्टअप दिखाता हूँ S1000 का, स्क्रैम्बलर का एंड Z4 का. S1000 का first we need to take the Z4 on a ride. Done with the 200 kilometers Sunday ride on the Z4. Now we need to take the bikes out for the next 200 kilometers Sunday ride. So first S1000 la गाड़ी आज Sunday ride में. चलो. S1000 राइड का तो है अलग स्क्रैम्बलर कैफे ऐसा तब है वो. Super tiring Sunday drive and ride day, 400 kilometers long and super tired, yes. I now need to maintain the bikes, need to clean and leave the chains right now for the Scrambler and S1000 both.
So now since it's a lockdown time, all of your cars and bikes must be lying idle. So I'm going to give you 10 tips how you need to take care of your cars and bikes in this lockdown period, or else by the time the lockdown is over, you'd be paying a lot of service bills. So the first point is start your vehicle every second day. Be it a car or a bike, start it every second day. Put on the ignition, keep the bike or car on for at least 5 or 7 minutes. And if you are really lazy, just remove the battery terminals. And I know 2 days is very short. Normally all of our new generation cars and bikes can stay almost more than 7 or 10 days, and you can just start and it can just go and get started. But I'm telling you 2 days because normally our people in India are lazy. So if I tell them 2 days, they're going to take 5 days. If I tell them 5 days, they're going to take 10 days. So basically that is what. So you need to just keep a timetable that you are going to start your vehicle in every 2 or 3 days, keeping the ignition on and keep the engine on for at least 5 to 7 minutes. The second thing is use a soft cover to cover your bike or car. Do not use that cheap हार्ड वाला कवर टू कवर योर बाइक्स एंड कार्स, बिकॉज वो जो हार्ड वाला रहता है, जब तक आप मतलब लॉकडाउन खत्म होगा तब आप जब निकालोगे, तब जब वो कवर निकलेगा ये पूरा पेंट का कुछ पार्ट को लेके निकल जाएंगे, बहुत सारा स्क्रैचेस भी आपको मिलेगा. तो हो सकता है तो सॉफ्ट वाला कवर अगर नहीं मिलता है, घर में कोई पुराना साड़ी वाड़ी होगा, कुछ भी होगा, सॉफ्ट वाला कुछ उसको डाल दो, उसके ऊपर वो वाला कवर डाल दो. दैट इज द बेस्ट चीपेस्ट DIY मेथड राइट नाउ. थर्ड, डू नॉट कीप द हैंड ब्रेक engaged in your car for a long time. Just at least keep the car in first gear maybe, or just use some kind of blockages in front of the tires. Just do not keep the car or store the car for a long time with the handbrakes, because the brake pads are going to get jammed and it's going to stick to the calipers. Fourth, make sure to move your car or bike at least once or twice in a week, because if you're not doing that, your tires are going to get flat spots and it's going to be almost impossible to get rid of those spots when the lockdown is over. Fifth, make sure all the cars and bikes tires are perfectly inflated to the recommended value of PSI. Do not keep them with the less PSI. उसको perfectly जितना आपको recommended है PSI उतना करके डाल के रखना है, क्योंकि अगर वो नहीं करते हो, जब तक ये लॉकडाउन खुलेगा तब तक जब मतलब इतना लॉन्ग टाइम तक आपका जो टायर रहेगा, अगर कम प्रेशर में वो ऐसे चिपक के रह के उस वो टायर्स में क्रीज क्रिएट हो जाएगा. उसके बाद 1 साल के अंदर आपको 4 टायर या फिर 2 टायर्स होंगे चेंज करने पड़ेंगे. उसलिए जितना भी रिकमेंडेड PSI है उसको भर के एग्जैक्ट पूरा भर के एयर प्रेशर को रेडी करके रखना है हर टायर पे. एंड बिफोर यू स्टोर योर कार और बाइक, उसको वॉश करके रखो. एक बार पूरा इंटीरियर एक्सटीरियर पूरा वॉश करो, उसके बाद जाके कवर डाल के उसको स्टोर करके रखो. पूरा वैसे गंदा करके, बहुत लोग ऐसे है कि हाँ अभी तो गाड़ी नहीं चलने वाला, ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही करके स्टोर कर देते हैं. एटलीस्ट उसको पूरा क्लीन कर दो, इंटीरियर एक्सटीरियर पूरा क्लीन करो, उसके बाद ही स्टोर करना है. उसके बाद अगर गाड़ी के अंदर आप कुछ भी फ्रेगनेंस यूज करते हो, वो जो बहुत लोग यूज करते हैं, छोटा वाला आगे है AC के वेंट के पास, उसको निकाल के फेंको. उसको नहीं यूज करना, आपको मालूम नहीं वो कैसे क्या उसको मतलब कुछ भी चीज़ अट्रैक्ट कर रहा होगा, उसको बाहर निकाल के फेंकना है. एंड गाड़ी को स्टोर करने से पहले उसका इंटीरियर पूरा अच्छा से साफ करके, मैट्स हो गया, अंदर का डैशबोर्ड वैशबोर्ड सब कुछ क्लीन करके एक बार सैनिटाइज करके उसके बाद ही स्टोर करो. एंड एक बार आपका ऑयल लेवल्स एंड कूलेंट लेवल्स इसको भी चेक कर लेना, क्योंकि लॉकडाउन के बाद अगर वो सब लेवल्स थोड़ा डाउन हो गया होगा, उसको जाके आपको इमीडिएटली टॉप अप भी करवाना है. एंड वंस द लॉकडाउन इज ओवर, यू नीड टू सैनिटाइज द होल कार वंस अगेन. बिफोर आप चलाओ उसका एक बार इंटीरियर, डैशबोर्ड, सीट्स, वो सब बॉनेट सबको एक बार सैनिटाइज करो, वॉश करो, उसके बाद ही गाड़ी को चलाना है. So I hope you loved our Sunday ride, our short sweet Sunday ride, and you also loved the 10 tips we just gave you how you need to take care of your bikes and cars during this lockdown period. If the video helped, go ahead and like the video, share the video with all of your friends on Facebook, WhatsApp, whatever it is, and just make the video viral. And let me know in the comments below if you have got any questions. Smash the subscribe button if you haven't done it yet, and don't forget to click on the bell icon to stay updated. I will see you guys in the next video.